Hi, guys, good morning. good morning. Welcome from Ghent. In today's video, we are taking you to Ghent, which is the medieval city of Belgium. So guys, here I am sitting on the viewpoint. यहाँ पर जो है किंग फिलिप आकर ऊपर से देखा करता था अपने हाइट ऑफ द कैसल. Hi, guys, good morning. good morning. Assalamu alaikum. Welcome from Ghent और local people will say the Ghent. हम पहुंच चुके हैं गेंट में और हम कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट और यहीं से करेंगे अपना टूर स्टार्ट. तो घूमते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि गेंट में क्या कुछ है. Let's go and explore, but let us first have a breakfast. Yes, sure. So this is the waffle, strawberry waffle with orange juice. Then we ordered some croissant and this waffle with fresh fruit for Afan. Afan, are you excited? Yes. How much? Good, very much. सो गाइस, हमारी आज की वीडियो में हम आपको लेकर जा रहे हैं गेंट में. हमने ली वहाँ से ब्रूज से ट्रेन विच इज़ फॉर द €7 एंड इट्स अराउंड 30 minutes अवे फ्रॉम ब्रूज. तो हम पहुँचे गेंट पे. Tot voor kort was het eigenlijk verbonden met de Universiteit van Ghent. So now we are taking our 5th boat ride and this is in Ghent. Boat ride is a very excellent way to see the city. एक आपको चलना नहीं पड़ता, प्लस एक बैठे बैठे आपको सारी लोकेशंस नजर आती है एंड द रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन. बल्कि लाइव आप कहें कि वो हमें बताते रहते हैं कि कहाँ फन फैक्ट्स हैं, कहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं. सो इट्स अ वेरी नाइस वे टू एक्सप्लोर द सिटी एंड वी फील वेरी एंजॉयबल. हाउ अबाउट यू? Yeah, it's a wonderful way to explore the city. Let's explore the city. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. I wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until winter comes? आज हम आए हैं गेंट बेल्जियम. और हम क्या कर रहे हैं? बोट राइडिंग. ये कितना मजा आ रहा है हमें. बहुत मजा आ रहा है. So now we're halfway the boat rides, and दोबारा जरूर this आएंगे. up till now we've been sailing on the Lay or the Lis river. Yeah, in Belgium we also translate the word as La Lis. The Lis. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? सो गाइस, हमारी जो है बोट राइड कंप्लीट हो चुकी है एंड वी आर बैक ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट. चलते हैं, उतरते हैं और चलते हैं कि आगे देखते हैं यहाँ क्या कुछ है. लेट्स गो. Oh, I wonder. Oh, I just wonder. It really makes me wonder. Yeah, I wonder. और सुबह हमने ली है बोट राइड और उसके बाद हम चल रहे हैं टुवर्ड्स द कैसल और एक्सप्लोर करते हैं कैसल को.
So guys, now we are going in Gravensteen Castle. ये जो है medieval castle है, बहुत ही ancient castle है. इसमें entry जो है वो तकरीबन 12.5 euro है adult की, and it's 2.5 euro for the child. यहाँ पर जो है काफ़ी stairs हैं, उनको climb करके ऊपर जाना होता है. साथ में म्यूज़ियम भी है and काफ़ी कुछ है. तो चलते हैं और explore करते हैं Gravensteen Castle. So guys, now we are going on the tour for the castle. यहाँ से हमने headphones ले लिए हैं. This is the souvenir shop. They will give you the recording, and now let's go. Which one do you want? Now Afan is taking the souvenir coin. I got mine. You got the souvenir coin? Oh, nice. Now put it in the collection, okay? Okay. So they give you this recording. You have to play it with the numbers, and you can listen about the room where you are going. So guys, अभी हम आ गए हैं top पर, which is the viewpoint. और ये है कि this castle is very ancient, very old, and very interesting to explore. So guys, here I am sitting on the viewpoint. यहाँ पर जो है किंग फिलिप आकर ऊपर से देखा करता था अपने height of the castle. You can see it's way up there. हम काफ़ी stairs चढ़ के ऊपर आए हैं और मैं अभी थोड़ा सा हाँप रही हूँ. बट ये है कि I can imagine जब उसको इतनी दफ़ा ऊपर नीचे आना होता होगा तो उसकी कितनी सांस फूलती होगी. मेरी तो फूल रही है. So Adef, how are you liking the stairs? Going down is easy, but going up it's a task actually. Yes, it is. So guys, अब हम जा रहे हैं नीचे और नीचे से जाएंगे किसी और तरफ to explore the castle. So fun watching here. Over here, you could for Anderson Anthony was there for 12 months Oh my god. in the freezing cold. Wow, that's dangerous. Let me show it. So guys, now we are entering into the torture room. This is the place where the prisoners were tortured. There are different procedures to torture them, and it's really a very depressing and scary room, I must say. So guys, this is the romantic terrace of the castle. यहाँ पर जो है जो किंग की डॉटर थी और उसको जो है लॉक करके रखा हुआ था कैसल में कि she couldn't meet with someone, but still she find her love, and the total love story begins with revenge, obstacles and everything. But finally, I guess they will meet. I found the clan. Now let's take on the other clan. So guys, here on my back side you can see all the school boys and school girls are coming. I think जिस तरह से हमारे different trips होते हैं उनके इन castles के ही trip होते होंगे. Very informative and very interesting. So Afan, did you like the tour of the castle? Yes. Is it interesting? Yeah. Oh, So much interesting. really? Yep, it is.
गाइस तो कैसल का राउंड लगाने के बाद हम आकर बैठे हैं अंकारा रेस्टोरेंट में। तो खाना हमने ऑर्डर कर दिया है। आसिफ को भूख ज़्यादा लगी हुई है। तो जैसे हमारा खाना आता है हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या ऑर्डर किया है। लेट्स वेट फॉर द फूड। तो गाइस हमारा खाना आ चुका है। आतिफ हमने क्या ऑर्डर किया है? फिश टॉप है और ये चिकन का सालन है कोई विद राइस। विद राइस। चलें स्टार्ट करें। और तो गाइस कैंट में लंच करने के बाद हम निकले ब्रसल्स के लिए। तो आतिफ कर रहे हैं टिकट परचेज। उसके बाद हम जाएंगे ब्रसल्स में। तो मिलते हैं आपसे ब्रसल्स में। हम वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा गेंट का टूर जो है वो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो फिर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय। They both look like this. But now we're going to turn right. We're going to go on Old Canal. Canal that's not really in use anymore.